Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome to Unacademy. So last time we discussion start करथिले fundamental rights ऊपर and this is the revision class basically for fundamental rights. Last time we discussed many important provisions of fundamental rights, why fundamental rights are there, how they can be amended. Then we discussed about Article 12, we discussed Article 13 and Article 14. We discussed all of those in the last two sessions. So today we'll move forward from the next article, Article 15. 15 onwards discussion ଆମେ ଆଜି କରିବା next article ବୁଝିବା. So Article 15, it is all about prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. So last time we discussed Article 14. If you remember, what does Article 14 signifies? It discusses key equality before the law and equal protection of the law. All are equal in the eyes of the law. It means there should be no discrimination, no social discrimination, no discrimination on the ground of economic or financial stability. And Article 15, it is a special form and it prohibits discrimination only on certain grounds. And Article 14 there should be positive discrimination, equal protection of the law. There should be positive protection. So Article 15 it discusses about prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Based on these 5 grounds, a person can never be discriminated. So it is the key term ki prohibition of the discrimination only on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Only refers to a person can be discriminated, but a person cannot be discriminated on these grounds. हम person को discriminate करी परिवा, but on the basis of हम देखिवा on the basis of religion, then we cannot discriminate. कि जने हिंदू अछि जने मुस्लिम अछि, on that ground we cannot discriminate. But जने Christian अछि जने Parsi अछि, we cannot discriminate. On the basis of caste, a person belongs to upper class and another belongs to royal caste, then we cannot discriminate. On the basis of sex, male female discrimination hame kari paribani. So discrimination can be there but not on these grounds. A ground रे discrimination हे paribani या व्यतीत जदि अलगा कोनोसी ground थाए, then those grounds are valid and से ground रे state एटी discriminate करि पारिबो. बुझी पाले समस्त 15 कोन कहूची. So this is all about 15. Then we'll discuss the relevant exceptions to this. Then Article 15.2 is there. समस्त बुझचंदी, those who are getting the points, comment type करंतु, बुझी पारछंदी बोली doubt असले commenter लेखंतु, so that I will reply to your doubts. बुझचंदी ना नहीं समस्त reply करंतु, those who are live right now. So next Article 15 or clause 2 देखिवा, it provides that there shall be no restriction on any person on any of the above basis to access and use the public places. तो ये कुछ कि public place को use करिया पाई, public place को use करिया पाई एक ground रे religion, race, caste, sex, place of birth ground रे आमे कोनोसी लोक को discriminate करि परिबा नाही बा कोनोसी लोक को मना करि परिबा नाही. So this is what about Article 15. Next, there are certain exceptions. There are certain exceptions to Article 15. कौन कौन exception अछि देखिबा. Article 15 clause 3 कहूची nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. यहाँ पर special discussion में करी थी last time. These articles are most important and Article 15 clause 3 this is violative to or this is an exception to Article 15 clause 2 or 1. Article 15 no exception 15.3 रे अछि. काहे कि ना हम already देखिचंदी कि there should not be prohibition of discrimination on the ground of sex. तामाने male female ground रे एटी discrimination करा जाय पारिबो नै. It means a special privilege to male or a special privilege to the female, it cannot be given. ये दिया जाय पारिबो नै. But in this case what happens, 15 clause 3 एटी clearly mention कला कि nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the women and children. It means for the development of women and for the development of children, legislation करा जाय परिबो, law formulation करा जाय परिबो and the state is completely competent enough to formulate any type of laws women मानकर development पाई as well as children मानकर development पाई, and it will not be a violation to the Article 15. ये 15 को violation हबो नाही. Then Article 15 clause 4 कहूची कि nothing in this article shall prevent the state
from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens belonging to scheduled caste and scheduled tribe. 15.3 empowerment kahaku dela women and children emanku empowerment dela women they are vulnerable section, they are unempowered section. 15 एटी empowerment दବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହା କାହା ଭିତରେ ନା unempowered and empowered section ଭିତରେ those who are unempowered ସେମାନଙ୍କୁ empowerment provide କରାଯିବ କେମିତି ନା through different type of legislation ବା through providing them reservation କେମିତି ଦେଇ ପାରିବା ନା different legislation କରି different law ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ reservation ଦେଇ ପାରିବା. For example 33% reservation quota for females empowerment ପାଇଁ children ମାନଙ୍କର special protection ପାଇଁ କିଛି laws चिल्ड्रेन मानक ପାଇଁ କିଛି स्पेशल लॉज ଯଦି ଆମେ କହିବା कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମାନ ଆକ୍ଟ if all are equal in the eyes of the law then law should be equal for everyone. ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଗୋଟେ चिल्ड्रेन means a minor ଯାହାର एज less than 18 से ଗୋଟେ କିଛି क्राइम करे then the person will be prosecuted as per the juvenile justice act. ଆମେ କହିବା कि नॉर्मल प्रोसीजर अनुसार प्रोसीजरल कोड अनुसार ताको पनिशमेंट दिया जाऊ एटा होय नाही कोन पई ना on the basis of age, on the basis of maturity the children's they are vulnerable section or they are unempowered section. तो मानको empowerment करिया पई एमानक पई स्पेशल लॉज प्रोवाइड करा जाय परिबो. In the same way article 15 clause 3 women और children मानको empower करथुवा बेले article 15 clause 4 scheduled caste एवं scheduled tribe मानको empower करूछि केमति ना for the advancement of any socially and educationally backward classes belonging to SC and ST. For them the state can formulate any law and that will not be violative to article 15. ଆମେ ଏଠି କହି परिबନି कि on the basis of caste ଏଠି discrimination ହେଇଛି ବା on the basis of caste एठी discrimination ହେଇଛି. Then article 15 clause 5 admission to educational institutions including the private educational institutions. Admission to educational institutions including the private educational institutions. एठी को मानकर admission ପାଇଁ कहूची ना those who belong to the special category, those who belong to the OBCs, SCs and STs, they are allowed in the admission. They are allowed in the national level institutions for their admission. Good particular reservation percentage रहिबो मानको पई. तो या पर टू IITs, IIM ये सब देखिबे एटी there is a reservation quota for each and every caste. Means for scheduled caste there is a reservation, for scheduled tribe there is a reservation, and for OBC there is a reservation. But these specialized institutions they are not included in this case. Specialized institution माने those institutions have been or inclined towards the institutions inclined towards research and development. For example, IIRS, Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun. TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. So institutions which are related to research and development, in that reservation quota will not work out. Reservations are not allowed there. But apart from that in other educational institutions like IITs, NITs, National Institutes of Technology, IIMs, Indian Institute of Management, in all those reservation is completely allowed. Then article 15 clause 6, it is a new one which has been inserted to article 15 and it provides economically reservation to the economically weaker section. Those who belong to EWS category, they will be provided with this opportunity. So 15.6 अनुसार economically weaker section quota ये reservation लाभ उठे परिवे को माने those who belong to unreserved category. जो माने unreserved category अछंती plus creamy layer रे जाउ नाहंती. क्रीमी लेयर रे न जाउथा दरकार या सहित आउ किछि भी कंडीशन अछि ईडब्ल्यूएस पई जेमति कि तंकर एवरेज डिस्ट्रिक्ट एवरेज लैंड होल्डिंग टू लैंड कम थिबा दरकार बा नियरेस्ट सिटी रे किछि लैंड नथिबा दरकार एग्रीकल्चरल लैंड हो बा रहिया पई घर हो ये नथिबा दरकार. सो डिफरेंट प्रोविजंस आर देयर those who will qualify then they will be given with the EWS quota. And EWS reservation it gets its empowerment from article 15 clause 6. So these are the exceptions to this article. Now let's practice a question. Which of the following is the difference between the fundamental rights and rights secured by other provisions of the Constitution? Which of the following is the difference between a fundamental right and right secured by other provisions of the Indian Constitution? First statement, fundamental rights are immune from constitutional amendments. Second, if the rights follow from other provisions of the Constitution, other aggrieved person may have his relief by ordinary suit only. Which will be the correct answer? जो मैंने क्लास करछन्ति कालिया वाजी, especially those who attended the class related to features or characteristics of the fundamental rights, मैंने आंसर करंतु. First option is true or false? Fundamental rights are immune from constitutional amendment. Comment करंतु. ठीक अछि ना भूल अछि? Fundamental rights they are immune from constitutional amendment. Are they immune?
from constitutional amendment? Yes or no? Fundamental rights ro amendment kara jai paribo na kara jai paribo nahi? Can they be changed with respect to time or as per the requirement of the time? Any answer? See, both 1 and 2. Rajnandini says both options are correct. Rajnandini says both options, fundamental rights are immune from constitutional amendment. See, let's examine the first one. Poonam says no. देखो, first option अच्छी, fundamental rights are immune from constitutional amendment. Think about it. मैं कहली वर्तमान के article 15 clause 6 ये भी तो fundamental right. ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ 15 ରେ କ୍ଲଜ 6 ଆସିବ କେମିତି? ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତ ଆର୍ଟିକଲ 15 ରେ କ୍ଲଜ 6 it was inserted. 15 clause 3, 15 clause 4 they were inserted later on. एमाने ପରେ insert ହେଇଛନ୍ତି ନା कि original constitution ରେ ଥିଲେ through amendment acts, through different amendment acts. बुझी पारले? So fundamental rights are not immune from amendment, rather they can be amended. So parliament has the authority to amend the constitution including the fundamental rights. Remember this statement. So fundamental rights are not immune from constitutional amendment. That is why first option is wrong. First option is wrong. Let's examine the second one. Don't worry, जो मानकर भूल ହେଇची व्यस्त होबार किछि आवश्यकता नाही. The best part की you have participated and you are exercising your brain. Brain exercise करूछंती, answer कोन हो भाबुछंती. So that is the best part. So ठीक भूल तो लागि रहइबो, concept बुझिले धीरे धीरे ठीक हे जिवो जहार भूल होछ. भूल होबा पई किछि व्यस्त होंतुनी. क्लास अटेंड करले किछि कोर्स कवर अप हे जिवा परे ये टाइप रो सब क्वेश्चन निश्चित भाव रे ठीक हो मु 100% एश्योरेंस दोछि. Second, if the rights follow from other provisions of the constitution, the aggrieved person may have his relief by ordinary suit only. Show करूनी clearly there might be some issue with your internet problem टिके हिताई पारे किछि व्यस्त होबार नाही ता पई यार सब pdf जहा जहा मु पढौची सबरो pdf is available there in Unacademy app. You can download the Unacademy app, then you will be getting all the pdfs there. ये सब जिंस पाई परिवेश किछि व्यस्त होबार नाही ता पई मु टिके व्हाइट स्क्रीन रिव्यू करि दउची. See if it is visible to you now. Now is it working? वर्तमान ठीक अछि. हला ठीक अछि. नेक्स्ट कंटिन्यू करिवा. सेकंड ऑप्शन देखो एटी. सेकंड ऑप्शन की if the rights follow from the other provisions of the constitution, then the party the relief can be get by the ordinary suit only. By ordinary suit only. Yes. यदि fundamental right रो violation ହେଇची then you have to use article 32 and article 226. 32 यूज करी डायरेक्टली जाई परिबे सुप्रीम कोर्ट, 226 यूज करी डायरेक्टली जाई परिबे हाई कोर्ट. But the other constitutional rights ro violation हुए, if the right has been derived from other provisions of the constitution, then there will be ordinary suit. Ordinary suit एटी हमको यूज करिया पई पड़ियो. स्वधर्म says राम राम. राम राम. Good morning समस्तंको. Those who have joined me. Indian polity constitution ऊपर हम डिस्कशन करूछंती, फंडामेंटल राइट्स रो डिस्कशन करूछंती. लास्ट दीटा क्लास रे मु फंडामेंटल राइट्स को एक्सटेंसिवली कवर अप करिथिली. बहुत गुडे प्रोविजन हम डिस्कस करथिले फंडामेंटल राइट्स रो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. With reference to rule of law, which of the following is true in India? With reference to rule of law, which of the following is true in India? This is the question. First, to establish government of law. To establish government of law. Second, to impose negative obligations on state. Third, to guarantee basic economic rights to the individuals. Examine every option one by one. The first option, to establish government of law.
What is it? It is true or false? To establish government of law. We want a government of law, not a government of men. Fundamental rights are there to establish a government of law, not a government of men. So option 1 is true or false? Option 1. Option 1 is true. It is a correct statement. Because government of law we want, not the government of men. Government of men kouthre mile? Na in the where there is a king, and when there is autocratic form of government, monarchical form of government, constitution is not there. Absolute authority is vested to the king itself. तो king पाखरे सब authority थाए, then हमें कोई परिवार की that is government of men. किसी लोग को माने सेठी राज्य शासन करंती, बट ये जगह तो हम पाखरे जुडिशियरी अछि, एग्जीक्यूटिव अछि, लेजिस्लेचर अछि, एंड ये समस्त समानकर authority कोठु डिराइव करछन्ती ना from the constitution itself. Arbitrariness हेई परिबो नाही. जदि लेजिस्लेचर बा एग्जीक्यूटिव किछि आर्बिट्रेरी लॉ फॉर्मुलेशन करूछंती, देन यू हैव द अथॉरिटी टू अप्रोच द कोर्ट. हमें कोर्ट अप्रोच करि परिबा समान लॉ को इनवैलिडेट करिया पई बा इनवैलिड करिया पई हमें कोर्ट रे केस करि परिबा. सो दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ लॉ, not the government of men. So first option is correct. Second, to impose negative obligation on the state. Yes, it is true to impose the negative obligation upon the state. काहे कि ना में स्टेट ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन रखुची. हम तो फीचर्स पढितले मन पका फंडामेंटल राइट्स रो फीचर पढितले तो केमति पढितले कि द स्टेट शैल नॉट डू लाइक दिस, द स्टेट शैल नॉट डू लाइक दैट. इट मींस these are positive for the citizens. It means it protects the rights of the citizens, whereas it provides some negative obligation upon the state. The state cannot do like this, the state cannot do like that. So second option is also correct. Third option, to guarantee basic economic rights to individuals. Fundamental rights, they don't guarantee economic rights, rather they are all about the civil rights or political rights. So economic rights, it is all about, it has been mentioned in the DPSP. So third option is correct. Only 1 and 2 are correct. Option B is the correct answer. Next, article 15 पर्यंत हम ए पर्यंत पढिले. नेक्स्ट आर्टिकल देखिबा आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. So this is an extensive form of article 15. 15 ने देखले protection, sorry 15 देखले कि no discrimination on the ground of race, caste, religion, all those. And वर्तमान देखबा कि equality of the opportunity in the matter of public employment. Public employment रे equal opportunity provide करा जिवो. Public employment रे equal opportunity provide करा जिवो. No one will be discriminated. It means हमें पूर्व आर्टिकल 15 रे पढिले कि द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. 16 रे पढुचंती कि द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. व्हाट फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पई स्टेट एठी डिस्क्रिमिनेशन करि परिबो नाही अमंग द सिटीजन. एई कथा हम आर्टिकल 16 रे पढुचंती. 15 रे जनरल टर्म रे हम पढिले डिस्क्रिमिनेशन ऊपर. आर्टिकल 16 रे एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयमेंट रे डिस्क्रिमिनेशन हे परिबो नाही बोली पढिले. सो 15 एंड 16 दे आर कोरिलेटेड. मन रखंतु 15 इट इज अ जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म रे ये डिस्क्रिमिनेशन हे परिबो नाही बोली कहूची. 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे डिस्क्रिमिनेशन हे परिबो नाही बोली कहूची. हमें कहबे गोटे एम्प्लॉयमेंट ओपीएससी खाली नोटिफिकेशन बाहर करिवो ओएस मानक पई कि ओनली फीमेल्स आर अलाउड और ओनली मेल्स आर अलाउड. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें कहि परिबो कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. कि males are allowed, females are allowed. At that point of time, you can directly approach the court again for violation of the fundamental rights. By using 32, you will approach Supreme Court. By using 226, you will approach the High Court. Simple concepts are there. So I hope you are clear with Article 16. Then there are certain exceptions to Article 16 as well. Article 16 को कुछ exception अच्छी and it has been mentioned in Article 16 clause 3. Residence qualification may be made necessary in the case of appointment under the state for particular positions. It makes the domicile provision stronger. ये कहूची कि particular form of employment रे, particular form of employment रे appointment हवा पाई, appointment मिलिया पाई domicile माने सही state रो citizen हितवा दरकार. एमिति provision ही परियो. तले कोई जगह हवा ये जदि सेमति किछि provision अछि जो जगह रे रेसिडेंस इज इंपोर्टेंट. ये क्लास 1 क्लास 2 सर्विस ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विस पे एप्लीकेबल नुहे, रादर
किसी लोकल पोस्ट पाई लोकल अपॉइंटमेंट पाई यार यूज होता है. So this is all about Article 16 Clause 3. Then 16.4, special provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen. तो ये backward class of citizen मान को ऊपर कहूँ those who belong to scheduled caste, scheduled tribe or other backward caste, other backward class को जो मान belong करते हैं. If they are not represented properly, adequately in the service of the state service रे जदि सेमान का representation properly नहीं ताहले सेमान को जॉब दबा पाई किछ रिजर्वेशन कोटा आना जाई पारिबो. ये स्टेटमेंट यार अथॉरिटी कोड डिराइव करूची ना आर्टिकल 16 क्लॉज 4 रु. क्लॉज 4 क्लियरली कहूची बाय एम्पावरमेंट प्रोवाइड करूची इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास. तो रिजर्वेशन प्रोवाइड करिया पाई आर्टिकल 16.4 इज इंपोर्टेंट and that will not be violative to article 16. ये 16 नो वायोलेशन करिवो नाही काहे कि ना 16 ने हमें पढिले कि द स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ रे डिस्क्रिमिनेशन ना होवा दरकार. तो ये कारणरू 16.4 क्लियरली मेंशन कर देला यदि बैकवर्ड सिटीजन मान को पई रिजर्वेशन दिया जाउची then that is not violation of article 16. Then 16.4 clause A, प्रमोशन. ये कुछ के प्रमोशन ने जॉब पाइबा समय रे कंपटीशन समय रे 16.4 एम्पावरमेंट देला कि हां रिजर्वेशन दिया जाय परिबो. ये तापर भी देखिला कि इन द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट लेवल ले डिसीजन मेकिंग लेवल ले some section of the society they are not adequately available. For example, scheduled caste and scheduled tribe. So for that purpose 16.4A it was inserted to the Indian Constitution through a constitutional amendment act and it empowers the state to provide reservation in the matter of promotion. Promotion ने भी reservation provide करा जाय परिबो. But गोटे शर्त अछि से condition कोन ना if the SC and ST they are not adequately represented in the government service then it can be provided. Then 16.4 clause B, it is all about the carry forward rule. Carry forward rule कोन reservation केबे भी 50% ऊपर को जाई परिबो नाही. मानि नंतु 100 टा पोस्ट बाहरी छि then 50 टा पोस्ट रहबो रिजर्व कैटेगरी पई 50 टा पोस्ट रहबो अनरिजर्व्ड कैटेगरी पई. बुझी पाले 100 टा पोस्ट बाहर छि 50 टा रहबो रिजर्व पई 50 टा रहबो अनरिजर्व पई. मानि नियंतु 2020 रे अनरिजर्व कैटेगरी पई 50 रिजर्व कैटेगरी पई 50 पोस्ट बाहर छि. रिजर्व कैटेगरी रे 50 टा पोस्ट रु 40 टा पोस्ट फिल अप होला 10 टा पोस्ट बाकी रहि गला. ता माने तो नेक्स्ट वर्ष पुणी बाहरियो वैकेंसी. मानि नियंतु 2021 रे वैकेंसी 200 टा बाहर छि. ताले ये 50-50 रूल अनुसार 50% 100 टा पोस्ट रहबो रिजर्व पई 100 टा पोस्ट रहबो अनरिजर्व पई. किंतु पूर्व वर्ष अर्थात 2020 मसिया रे 10 टा पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी रे बाकी थिला 50 टा रु 40 टा फिल अप होइतिला 10 टा पोस्ट बाकी थिला. त माने पूर्व वर्ष रो 10 टा पोस्ट जेतोला आसी करंट ईयर रे ए वर्ष ऐड हे जिवो ताको कैरी फॉरवर्ड रूल कहंती. त माने 2020 रे 10 टा पोस्ट आसी कि 2021 रो 100 टा पोस्ट सहित मिसी गला. टोटल पोस्ट 2021 रे थिला 200 टा 100 टा थिला रिजर्व पई 100 टा थिला अनरिजर्व पई. पूर्व वर्ष रो 10 टा रिजर्व कैटेगरी रो पोस्ट ए वर्ष मिसी गला ताले केतेला 100 प्लस 10 110 110 टा पोस्ट हे गला को मानको पई ना रिजर्व कैटेगरी पई अनरिजर्व पई 100 टा रिजर्व कैटेगरी पई 110 टा. त माने रिजर्व कैटेगरी नंबर इंक्रीज करि गला अनरिजर्व कैटेगरी टू. ये को जति एटा होउची याको कैरी फॉरवर्ड रूल कहै छै एंड दैट इज नॉट वायोलेटिव टू आर्टिकल 16. ताल भी आर्टिकल 16 नो वायोलेशन करिवो नाही. दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 16.4b. देन आर्टिकल 16 क्लॉज 5, nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing particular religion. अर्थात यदि गोटे पर्टिकुलर रिलीजन पाई किछि पोस्ट रिक्रुटमेंट होउची पर्टिकुलर रिलीजन रो माने जगन्नाथ मंदिर पाई जदि किछि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आसी किछि रिक्रुटमेंट होउची बा किछि मॉस्क पाई जदि होउची बा किछि चर्च पाई जदि होउची देन एई समय रे हमें रिलीजन एज अ मेजर फैक्टर क्वालिफाइंग फैक्टर हिसाब रे यूज करि पारिबा. चर्च रे काम करिया पई जण क्रिश्चियन हेतवा दरकार, मॉस्क रे काम करिया पई जण इस्लाम रिलीजन हेतवा दरकार बा गोटे मंदिर रे काम करिया पई जण हिंदू रिलीजन को बिलोंग करिया दरकार. एंड दिस विल बी नॉट अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 16 बिकॉज़ 16 तो ऑलरेडी कोइ देछि कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे डिस्क्रिमिनेशन करि परिबा नाही. तेन ए जगह रे डिस्क्रिमिनेशन करा जाई पारिबो. यदि डिस्क्रिमिनेशन करा जाउची 16 क्लॉज 5 अनुसार दिस विल नॉट बी अ वायोलेशन ऑफ द आर्टिकल 16. नेक्स्ट 16 क्लॉज 6, it is all about economically weaker section.
ये पूछी जदि फैमिली इनकम प्लस अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस इज देयर if it is less than 8 lakhs per annum along with other criteria, then a person will be provided with economically weaker section reservation, EWS reservation जन को मिल पारिबो। या विषय डिस्कशन 16 plus 6 रही। So this is all about 16. Then 16 पर the next is all about 17. 17 is all about abolition of untouchability. तो अनटचेबिलिटी बुझी पारथुन समस्त अनटचेबिलिटी मींस अनटचेबिलिटी रो डेफिनेशन कोनसी जगह रे नाही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि देखबे ताल अनटचेबिलिटी कोन या पर कोनसी जगह रे डिस्कस करा जाय नाही बा अनटचेबिलिटी रो डेफिनेशन दिया जाय नाही। किंतु माद्रास कोर्ट पर ऑर्डर अनुसार मानिबा बा ये होची अनटचेबिलिटी रो डेफिनेशन कि दिस इज द प्रैक्टिस इन द हिंदू रिलीजन स्पेशली एंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ टू अ लोअर कास्ट और टू अ अपर कास्ट। ई बेसिस रे ये को हमें untouchability practice करा जाउची in India. So article 17 discusses of to reduce or to abolish untouchability completely. In any form untouchability should be completely debarred in India. So this is by the Mysore High Court. It is the verdict of the Mysore High Court जे define करतले कि what is untouchability. Untouchability रो definition constitution में नाही। Then abolition of title. It has been discussed in Article 18 of the Indian Constitution. Abolition of the titles. अर्थात ये कुछ पूर्वरु जेमती टाइटल थिला, टाइटल्स लाइक राय बहादुर, चौधरी, ये टाइप रो टाइटल जोटा ब्रिटिशर माने दउतले, it will be completely abolished. So the state even if it cannot confer any title, state भी एठी टाइटल दे परिबन, but यासी त किछि एक्सेप्शन अछि। एक्सेप्शन कोन जणो पाखे मिलिटरी डिस्टिंक्शन अछि, परमवीर चक्र, वीर चक्र, एवला डिस्टिंक्शन अछि, एकेडमिक डिस्टिंक्शन अछि लाइक डॉक्टरेट बा डीलिट, ये सब को यूज जण करि परिबो, एथरे कोनोसी असुविधा नाही। सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, military qualification by military distinction, they can be used and they are not considered to be the titles. They are allowed in India. Then in the same way the Padma awards, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, ये सब यूज करा जाय परिबो ना पूर्व, एथरे कोनोसी असुविधा नाही and they are not considered to be titles. से माने टाइटल नुहंती। So national awards, they can be used like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and it is according to the order by the Supreme Court of India in 1996. 1996 order अनुसार they are not considered to be the titles. So this is all about Article 18. Now the next is Article 19, the most important article of the Indian Constitution, the most debatable article of the Indian Constitution as well. So Article 19 is all about 6 fundamental rights and it is related to freedom of speech and expression. So first is the freedom of speech and expression. Now first understand key what is the reason behind protecting the freedom of speech. Why freedom of speech and expression it should be given. The reason is for the participatory democracy. Participatory democracy कहले तार अर्थ कोन बुझंती? When participatory democracy means when people will participate in the democratic process. All the person they will participate in the democratic process. That is known as participatory democracy. And participatory democracy को promote करिवार उद्देश्य कोन? ना because constitutionalism. Constitution कोन constitutionalism कोन या पे पढैतली. Simply खाली code of conduct रहबा rule regulation रहबा को constitution कोनती, whereas rule of law रहबा को constitutionalism कोनती बा supremacy of the constitution को constitutionalism बोली कोनती. So democratic country रे जेतोडा active participation, people will be allowed for active participation in the government, in the decision making process, in the formulation process, in the implementation process, then that is known as, then that is called the participatory democracy. Then another reason is to discover the truth by open discussion. Open discussion, why is it allowed? Open discussion allow होर कारण कौन? Now open discussion allow कले it will lead to participatory democracy. When people will think about something, they will participate in the matter of government process, in the administrative system, they will participate. Then the truth will come out, transparency will be there, good governance can be established. So this is the reason for which we need freedom of speech. Then we need freedom of speech to express our belief, to express our political attitude. यार मीनिंग कौन? Express our belief अर्थात मान्य तो जन पोएट अछि, जन पोएम लिखिछि, तो आपसे एक्सप्रेस करबो, जदि हम तार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रोक लगै दबा, रेस्ट्रिक्शन लगै दबा,
ताले इट सेल्फ ग्रोथ डेवलपमेंट हे परिबनी गोटे साइंटिस्ट नुवा जिंस डिस्कवर करछि से ताको एक्सप्रेस करिया पई चाहूछ हम जे ताको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन न दबा द स्टेट बा सोसाइटी जे ताको न दिए देन ऑटोमेटिकली से लोकर सेल्फ ग्रोथ बा डेवलपमेंट हे परिबो नाही सो ये कारणरू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज रिक्वायर्ड नेक्स्ट फ्री स्पीच एज एन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट एंड डेवलपमेंट ये कथा हम कहली वर्तमान कि सेल्फ डेवलपमेंट के सेतबेले हे परिबो जेतबेले फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करा जिवो जण हम देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कौन कौन अछि गोटे पर गोटे डिस्कस करबा फ्रीडम ऑफ इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ पब्लिक ऑर्डर 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम अगेंस्ट बंद, राइट टू टेलीकास्ट एंड राइट टू एडवर्टाइज। ये आर्टिकल 19 ये एब्सोल्यूट नहीं है, rather there are certain restrictions upon it, reasonable restrictions are there। को ग्राउंड reasonable restriction लागि परिबो ना प्रथमतः sovereignty and integrity of India, प्रथमतः sovereignty and integrity of India मानिने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करी जदि हमें किछि कहउछन दैट इज अगेंस्ट sovereignty of India, that is against integrity of India, then that is you cannot use the freedom of speech and expression। freedom of speech and expression अंडर रे हमें एठी प्रोटेक्शन नहीं परिबा नाही। डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोगन सुनिथिबा एंटी इंडियन स्लोगन्स लाइक भारत तेरे होंगे 100 टुकड़े, भारत की बर्बादी हमारी आजादी। सो दिस टाइप ऑफ स्लोगन्स which are against the sovereignty of India, which are against the integrity of India, or which have the intention to disintegrate India, they are not allowed। Reasonable restrictions, it can be imposed upon them। Then security of the state, on the basis of security, reasonable restriction can be there। So when there is a threat to the security of the state, let's say a person is working in Indian Army and the person was working in the intelligence input department, and after the retirement in the public forum the person will start discussing about the loopholes of Indian security system। It doesn't mean we are promoting participatory governance, but participatory development of the democracy, rather we are just informing our loopholes to our enemies, to the foreign countries। हमें हमारा loopholes को जणाउछंती कि एही जगह रे हमारा loopholes अछि, एही जगह रे इंडियन आर्मी मिस्टेक करि पारे। सो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ग्राउंड रे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लागि पारिबो। फ्रेंडली रिलेशन विथ द फॉरेन स्टेट्स, यदि हम एमिति किछ स्टेटमेंट दउछंती जोटा फॉरेन स्टेट मानक सहित हमर रिलेशनशिप को हैम्पर करिवो, इंडिया रिलेशनशिप को बायलैटरल बा मल्टीलैटरल रिलेशनशिप को हैम्पर करिवो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी imposed upon your freedom of speech and expression। Then on the basis of public order कहले कोन बुझंती कि यदि पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही पर नाही, जणे कि हेट्रेड स्पीच दोउची जा फल रे दीटा कम्युनिटी भीतर दंगा हवार आशंका अछि, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करि हबनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पाई, ताली ये जगह मध्ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लागि परियो। डिसेंसी एंड मोरालिटी ग्राउंड रे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लागि परियो। हमें कहबा कि जणे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज कर जण को गाली दोउची, स्कोल्डिंग बाय यूजिंग सम filthy languages। Then on the basis of morality and decency, reasonable restrictions they can be imposed। Contempt of the court, the most important one, contempt of the court। ये जगह पूछन तो contempt of the court is of two types, civil contempt and criminal contempt। civil contempt and criminal contempt। civil contempt कोन, आपन को डेट दिया जाई छि गोटे लोक को 10 तारिख जाई कि देखा करर अछि, कोर्ट रे पहुंचवार अछि, कोर्ट समन करछंती, बट द पर्सन इज जानि सुनि कि गोटे लोक जाई कि देखा कर, willful disobedience to the order of a court, that is civil contempt। ताले क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोन, जदि कोनोसी लोक जुडिशियरी रो प्रोसेस को सिस्टम को कंटेम्प्ट करियो, कंटामिनेट करियो चाहूची, चेंज करियो पय चाहूची, अल्टर करियो पय चाहूची प्रथम बा जज जो वर्डिक्ट दैचंती ताकू से अदर वे रे क्रिटिसाइज करूची, जुडिशियरी को क्रिटिसाइज करूची, ताले ये जगह तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट मा जाय। सिविल कंटेम्प्ट सहित आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन न किछि रिलेशन नाय, rather क्रिमिनल कंटेम्प्ट सहित रिलेशन अछि। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्रशांत भूषण केस, रिसेंट प्रशांत भूषण केस को आपण देखि पारिबे। मैक्सिमम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव कंप्लीटली abolished the criminal contempt, but in India criminal contempt is still a criminal offense। so criminal contempt कोन कहूची, criminal contempt कहूची कि यदि गोटे कोर्ट रो वर्डिक्ट को क्रिटिसाइज करछंती, जज को क्रिटिसाइज करछन, देन अ पर्सन विल बी अरेस्टेड अंडर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जा अंडर प्रशांत भूषण को अरेस्ट कर दैथिला रिसेंटली।
then incitement to an offense. This is another reasonable restriction which can be imposed. Jodi amar freedom of speech and expression द्वारा जदि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन द्वारा कौन से ऑफेंस को हम इनसाइड करछंती गोटे दंगा हे पारे भविष्य रे ताले ए जगह रे मध्य फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विल नॉट बी अलाउड यू कैन नॉट एंजॉय इट right to information is also there in freedom of speech and expression. Then right to know state of Uttar Pradesh versus Raj Narayan case 1975 रे आसिला कि right to know it is also included in the concept of freedom and speech. It is also included in the concept of freedom and speech because right to know is our basic right. Then yes, with आउ गोटे जिनस भी एसोसिएटेड हे करते right to advertisement. Right to advertisement newspaper. Yes, like a right to advertisement, whether it is a fundamental right or not. Yes, it is a fundamental right. केमती है fundamental right? ये कहला कि advertisement होची basic source of income for the newspaper publication companies, for the publication house. If the advertisement Norway, then the price of the newspaper that will hike. बहुत अधिक हो जिवो जोटा 5 टका 10 टका कहउछन सेटा 50 टका हो जिवो daily basis. प्रत्येक दिन को यदि 50 टका हो जाय newspaper, then एक किनिबे paper. The right to know already the 1975 Raj Narayan case रे आसी सारछि कि right to know होछि गोटे fundamental right. Right to know is a fundamental right. Raj Narayan case already आसी सारछि. तो वर्तमान कोछि कि हमें पेपर को न्यूज़पेपर को एडवर्टाइजमेंट दउ नाथि देन न्यूज़पेपर रो प्राइस पड़ी जिवो एंड प्राइस बढ़िले लोक किनि परिबे. That means right to know is indirectly violated. That is indirectly not protected. So right to know को impose करिया पई हमको right to advertisement रहबा दरकार. तो ये कांसेप्ट को बुझो कहार कहां से तो लिंक अछि को केस रु किया आसला केमती इंटरलिंक करबे राइट टू नो को राइट टू एडवर्टाइजमेंट सहित फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रे यार रिलेशन कोन अबाउट मेनी कांसेप्ट्स द बुक लक्ष्मीकांत इज साइलेंट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस कांसेप्ट्स एको बुझियो पडियो भलो भाबरे इंटरेस्टिंग टॉपिक फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट केमती एठी काम करचंती केमती एठी अमेंडमेंट होची कॉन्स्टिट्यूशन नो फंडामेंटल राइट रो केमती जुडिशियल रिव्यू होची ऑल दीज आर इंटरेस्टिंग कांसेप्ट्स एको ठीक भाव बुझंतु भल लागियो. 1981 गोटे केस आसला एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया and in this case the concept of open government it was given. Open government तो open government कोन यार ऊपर बेस करी एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981 ऊपर बेस करी 2005 रे पार्लियामेंट आनिले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आरटीआई एक्ट 2005 रे आसिला तो एतार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिबे देन इट कैन बी कनेक्टेड टू एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981. In this case, the concept of open government it was introduced. Then what is the meaning of concept of open government? It means transparency should be there. If we want good governance, then transparency should be there in the government machineries. Government administrative machinery रे transparency रहिबार आवश्यकता रहिछि. Then only एको केमति ताले हम implement करि परिबा. Then right to information. You can collect information about the government. Government रो डेली बेसिस रे फंक्शन ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऊपर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करि परिबा जाकू राइट टू इंफॉर्मेशन हिसाब रे पार्लियामेंट 2005 रे एनैक्ट कले. देन सेडिशन न कथा जानथिबे बहुत जगह रे सेडिशन केस लागि छि वर्तमान रिसेंट अरेस्ट द बेंगलुरु कश्मीर रे बहुत जन अरेस्ट हेतला. यू कैन टॉक अबाउट कन्हैया कुमार केस एज वेल फॉर रेजिंग द प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स और एंटी इंडियन स्लोगन्स लाइक भारत तेरे होंगे 100 टुकड़े भारत की बर्बादी हमारी आजादी ये टाइप रो स्टेटमेंट को हमें सेडिशन बोली कहबा. तल ठीक सेडिशन न हिस्ट्री देखिबा सेडिशन आसी छि कोठू सेडिशन सेक्शन 124 ए इंडियन पेनल कोड रे डिस्कस होई छि या ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने सेडिशन ऊपर किछि डिस्कस हेई नाही. इंडियन पेनल कोड सेक्शन 124 ए रे या ऊपर डिस्कस होई छि एंड सेक्शन 124 ए इट वाज ड्राफ्टेड इन द ईयर 1870 बाय थॉमस बैबिंगटन मैकाउले. punishment इतर non bailable offense 1870 रे बेल मिली परिबनी एतरे. देन जहां against the sedition charge लागिवो the person cannot apply for a government job. The government job ता लाइफ रे मिली परिबो नाही. There are famous personalities देखिबा इंडिया रे. Then जोगेंद्र चंद्र बोस in 1891 he was trial for sedition. बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी ये समस्त sedition charge रे पूर्वरु यहाँ को against लागी साइज. Yes, you can talk about the JNU case, Keshari Kumar case, So recently, the essential ingredients of sedition, it took a new dimension in India after the Ramesh Thapar case, Kedarnath Singh case, and Keshari Kumar case. And the most important ingredients of the sedition, according to
These cases are, according to Supreme Court, the first is the disruption of the public order. Disruption of the public order, if you're saying something and it is against the maintenance of public order, then it will come under sedition. Attempt to violently overthrow a lawful government. A lawful government means by means of democracy, by means of election. If a government is elected and it has been established according to the constitutional machineries, then that is known as a lawful government. And if a group of people, they are trying to overthrow the lawful government, at that point of time it will come under sedition. Then threatening the security of the state or the public, यदि security को threat आनुतने किसी कोई कि ताहले से मध्य sedition under आसे. केमती जने बर्तन YouTube रे जने वीडियो करके छाड़ देबो कि मु एई तारिख दिन एटी बम पके देबी, तो थ्रेट देबो पब्लिक थ्रू मीडिया, इंटरनेट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू रे, ये भी सेडिशन चार्ज अंडर एटी आसीबो. This is all about sedition. Next is right to assemble peacefully and without arms, article 19(1) clause B. Right to assemble peacefully and without arms. Arms and ammunition use न करी हमें assemble ही परिवार बटे जाएगा. अरे किसी characteristics अच्छी है, assembly completely peaceful और harmonious हवा दरकार. And it should be unarmed. इटे arms and ammunition use करी परिवार. Plus यहाँ पर reasonable restriction लगी परिवार. Assembly ऊपर reasonable restriction लगी परिवार. ताले को जगह reasonable restriction लगी परिवार. को जगह रे जदी कौन सी government official तार duty discharge करचंती and government official तार duty discharge कला बेले हमें गोटे assembly करिबा, freedom of assembly करिया 5-10 जन तांको prohibit करिबा, prevent करिबा से लोगों काम करिया पई, ताहले ये जगह रे ये illegal. जदि गोटे निश्चित बा criminal trespass करिया पई करिबा, गोटे criminal activity करिया बा कोनोस जगह जबरदस्ती illegally पसिया पई हमें प्लान करछे 5-6 जन मिसिकी, ताहले मध्य ये एटी right freedom of assembly रो सहारा में नहीं परिबानी and it is completely illegal. Then जदि 5-6 जन मिसिकी हमें आउ गोटे लोक किछि illegal काम करिया पई कहउछे, किछि गोटे illegal काम करिया पई आउ गोटे लोक काम बाध्य करछन, ताल से जगह मध्य ये freedom of assembly रे जीवनी ये illegal association हिसाब रे जीवो. Then जदि कोनोसी लीगल एग्जीक्यूशन चली हमें ताको बंद करिया पई चाहुचे, ताहले मध्य ये क्रिमिनल एक्टिविटी रे जीवो बा राइट टू असेंबली रे जीवन नाही. या पर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू असेंबली ऊपर डिस्कशन तो है फ्रीडम ऑफ असेंबली ऊपर, बट असेंबली डिफाइन हिची सेक्शन 141 इंडियन पेनल कोड रे, सेक्शन 141 इंडियन पेनल कोड एंड सीआरपीसी सेक्शन 144 रे देखिबे कर्फ्यू लागे, जो कर्फ्यू लागे कोन धारा 144 लागे, कहार धारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रो धारा 144 लागे, 144 लागे, अर्थात जो जगह 144 लागे से जगह मैजिस्ट्रेट कंप्लीटली मीटिंग प्रोसेसन को बंद करि पारिबे व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ, देयर इज अ थ्रेट टू द सेफ्टी, डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये जगह मैजिस्ट्रेट रिस्ट्रेन करि पारिबे. देन फ्रीडम ऑफ असेंबली को हेल्थ ग्राउंड रे बंद करा जाय पारिबो. हम कहबा असेंबली करबा जो बाहागर रे वर्तमान देखतुए कि नोटिस आसुची बाहागर एति जण रु अधिक अटेंड करि पारिबे नाही बा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करबे कोरोना टाइम पीरियड रे, ये सब मध्य हमें कहबा कि नहीं 10 जण अटेंड करबा फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये तमरो संवैधानिक अधिकार, ये मोर मौलिक अधिकार, ये मोर फंडामेंटल राइट्स, हम 10 जण असेंबल हबो गोटे जगह, बट यू आर नॉट अलाउड फॉर दैट ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ. देयर इज अ थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ, इन दैट ग्राउंड the persons are not allowed for the freedom of assembly, it is assemble he paribe nahi. The next is freedom of association. The freedom of association, it is completely association formation kari paribe, company, partnership, firm, political party, ये सब formation kari paribe, याको freedom of association बोली कहते. So ये अधिकार हमको दिया जाय छि संविधान अनुसार हमें डिफरेंट एसोसिएशन एस्टैब्लिश करि परिबा, कोनो असुविधा नै एसोसिएशन एस्टैब्लिश करिबा. Right to move freely throughout the territory of India. You can move freely throughout the territory of India. India भीतर हमें कोनोसी भी जगह रे मूवमेंट करि परिबा. देखो मूवमेंट दी प्रकार ही पारे, गोटे इंडिया भीतर गोटे इंडिया बाहर. अपन ओडिसा रो झारखंड जाउछन्ती, नॉर्थ ईस्ट जाउछन्ती, सिक्किम, गैंगटॉक, कश्मीर जाउछन्ती, यू आर अलाउड. एंड एही जगह रे अपन को अधिकार मिलुची आर्टिकल 19 अनुसार. बट इंडिया अमेरिका जिबे, लंदन जिबे, चाइना जिबे, ये जगह रे अपन को अधिकार मिलुची आर्टिकल 21 अंडर. Moving outside the country, Article 21 right to life and personal liberty under अपन को दिया जाय छि. Inside India movement Article 19 under दिया जाय छि. But ए जगह रे भी किछि certain restrictions अछि, जेमति कि the restrictions in this case protected area को जाई परिबेनी. कि जो जगह नेशनल पार्क अछि प्रोटेक्टेड एरिया से जगह को जी बुलिया पई you are not allowed. Scheduled tribal area जो जगह रे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देछि से जगह को जाई परिबेनी. बा in the interest of general public if you are not allowed then you cannot move. माने तो गोटे लोक कोविड 19 नै छि,
the person is the victim of COVID-19 disease received, so already संक्रमण है सच तल से कहो मुझे जागो सब जागो प्रत्येक जगह बुलियो जी because right to move freely throughout India is my fundamental right. So in that case on the ground of public health the person is denied ये लोग को जाई परिबनी मिसी परिबनी अलग लोक मान को सहित तो एटी कहबनी कि मोर fundamental rights violate ହେଲା. So reasonable restrictions are always there with fundamental rights. Then right to reside and settle in any part of India कोनोसी जगह रे जगह किनि परिबे घर करि परिबे रहि परिबे जदि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अछि हमें मूवमेंट करि परिबा विभिन्न राज्य मान को भीतर विभिन्न जगह मान को भीतर इंडिया रे ताले यू हैव द राइट आल्सो टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया कोनोसी जगह रे जगह किनि घर करि रहि परिबे कोनो असुविधा नै. So 19(1)(d) and 19(1)(e) they are complementary. You can move and you can settle anywhere in India. The next is right to profess, practice and to carry out any occupation of trade or business. निजे कोनोसी टाइप ऑफ बिजनेस करि परिबे निज इच्छा अनुसार कोनोसी काम करि परिबे एतरा आपन कोनोसी प्रकार के मना करिवे नाही. बट एथरे गोटे ऑब्जेक्शन अछि कोइ मते भल लागछ मु न्यूरो सर्जरी करिवे ब्रेन सर्जरी करिवे जाई कि तो ये जगह यू आर नॉट अलाउड कोन भाई ना पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन दरकार या पे तो जो जगह क्वालिफिकेशन दरकार से क्वालिफिकेशन नथबे जोटे अनस्किल्ड काम अछि से जगह रे यू कैन चूज योर प्रोफेशन बट जो जगह क्वालिफिकेशन दरकार फर्स्ट यू हैव टू पोजेस दैट क्वालिफिकेशन देन यू विल बी अलाउड टू डू दैट प्रोफेशन otherwise the profession ne kaam kari paribe nahi. This is all about article 19. I hope all of you understood very clearly. Jodi ko man ko doubt hochi mate kohantu article 12 13 14 15 16 17 18 bhalo bhabare bujhile na nahi. This is the extensive or elaborative explanation of article 19 ya pratyek phrase ko mu discuss karichi. article 19 ne kebal 19 को discuss kariya pai emitare mu 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास दीटा निये बट जेहेतु हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रे देखुछन किछि इंपोर्टेंट सेक्शन खाली देखुछि बर्तमान प्रीलिम्स हिसाब रे रेस्ट ऑफ द टॉपिक को एक्सटेंसिवली कवर करिछि अनअकैडमी प्लस रे स्पेशल क्लास मान करे YouTube सेशन मान करे अपन देखि परिबे ये पुराना क्लास मान को दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नियंतु यूज करो रेफरल कोड इजी वॉइस यूज करंतु सो दैट विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रेफरल कोड को यूज करंतु डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाय छै अपन देखि परिबे. So for more details अपन Unacademy आप डाउनलोड करू जो माने डाउनलोड करि नहंती ये completely free of cost and special classes that is also completely free of cost अपन ये सब क्लास करि परिबे. So recently समीक्षा बैच and सामर्थ्य बैच ये कंटिन्यू होची ASO एग्जाम पई and OS एग्जाम पई ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जाम and OS एग्जाम पई कंटिन्यू होची join to those batches. Subscribe to Unacademy Plus and let's crack the exam you have already dreamed for. So thank you everyone, have a good day, see you in the next class. If there are doubt in comment section lekhi paribe, definitely I will try to clarify your doubts. So thank you, have a good day.